Good morning, team. So we are nearing the budget. No, just in 2 months, 1st of February, normally we will have the budget. And very important is, this will be the last full budget before the general election. So next year, 2024, we will be having a general election. So 2023 budget will be something where government would like to do a lot of infrastructure push. So in that effect, government is working for port infrastructure where the expectation is 2 lakh crore upgrade to ease logistic pain. So there are 298 projects, including road, rail connectivity, and ports have been identified. So last year we had 7,50,000 crores as infrastructure spending, or capex spending from the government. But due to tax buoyancy, the coming year, the market is expecting higher expenditure. So even in railways, even in infrastructure, so stocks like KNR, Infra, and other infra stocks have started to rally. Even rail stocks have started to rally. And as we are making an all-time high, beaten down stocks also will start to rally. I expect a rally even in IT stocks. IT looks very good, but these are pullbacks rallies. I'm not expecting a bull market rally in IT, but pullback rally in IT is possible. Even life insurance as a sector looks very good. ICICI Pru yesterday did the event with Motilal Oswal, where they have talked many things, forward-looking statement. I think that is very positive for ICICI Pru Life. I expect at least 12 to 15% rally in ICICI Pru Life. We already like SBI Life, HDFC Life, and Max Financial Services. Even McDowell, that looks very good for 12 to 15% rise. And there was one more data which said that defense export in FY22 was 13,000 crore, but FY23, the expectation is 17,000 crores. And very soon, I think, we will double from 17,000 crores. So, defense stocks are still looking good. I don't think, one should worry. Any correction would be an opportunity to buy. In that, in private segment, we like Bharat Forge the best. It offers some value for investors at current level also. ONGC gas price to be capped at $6.5, for 5 years, and there is no change in Reliance BP gas. This is positive for OMCs. Otherwise, piped gas or other gases, which OMC's oil marketing company supply, they have to bear the losses. But at least, government has put a 5-year roadmap where they have not given any hike to anyone. Gland Pharma is in news. Now they have bought Europe-based Tennessee for 1,000 crores. And now that will be very positive for them. It complements their business. And in one more news, China-based Fosun Pharma, which holds stakes in Gland Pharma, is looking to sell its stakes. So almost it holds 57.86% in Gland Pharma. And Gland Pharma specializes in injectable drugs such as antibiotics, oncology, and cardiology treatment. And they have a presence of about 60 countries. And this is, Fosun Pharma selling will be very positive for Gland, because there is always a fear that Fosun is not in good shape because of the China crackdown on business people. So that hangover was there. That is why the stock has corrected more than 40% from the highest level. Now, if they sell their stake to somebody else, that will be very positive. And I was looking at few data. We have protests going in China and lockdown in China. So there are many companies which do business inside China, and those stocks will be impacted. For example, in Tata Motors case, JLR has 31% market share in China.
So no, Tata Motor will be impacted because JLR plays a major role in Tata Motor. Voltas gets almost 20% of the components from China. Kaplan Point, 40% export is to China. So that will also be impacted. Now, VIP Industries, their raw material 50% comes from China. So that is something to watch out for. These are few stocks I've listed out. These are stocks to watch out for. Fitch Rating has said that telecom ARPUs are likely to rise by 8.2% in 2023. Now, it is positive for Bharti Airtel and Reliance, but due to few reasons, we like Bharti Airtel being a standalone till the demerger doesn't happen with Reliance. So Bharti Airtel is, if you are a trader for 3 to 6 months regularly, it will give you 12% to 15% return when you buy in correction. So this is one more stock to concentrate. With that, over to you, Kshitija. थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग ये कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं। फर्स्ट जो अपडेट है वो टेक महिंद्रा के ऊपर है। टेक महिंद्रा ने एक एमओयू साइन किया है एक्सपर्टिया ग्रुप के साथ, जो डेवलप करेंगी मार्केट 5G एंटरप्राइज सॉल्यूशन ओवरऑल, जो अक्रॉस मलेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल और कंबोडिया कंट्रीज में। ये जो कंपनी है बेसिकली मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर है, और ये एमओयू से टेक महिंद्रा डेवलप करेंगी 5G सॉल्यूशन इंडस्ट्रीज के लिए, जो इंडस्ट्रीज है मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल एंड गैस सर्विसेज एंड बहुत सारे अदर सर्विसेज है इनके लिए। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है टेक महिंद्रा के लिए। और टेक महिंद्रा अपना 5G सर्विस का जो पोर्टफोलियो वो एक्सटेंड कर रही है कस्टमर्स को अक्रॉस ओवरऑल एशियन मार्केट्स में। द नेक्स्ट अपडेट है कि ब्रिटानिया है वो एंटर कर रहा है एग्रीमेंट में, जो जीवी विद फ्रेंच कंपनी BELSA और ब्रिटानिया डेयरी BDPL, जो डेवलप और मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन और इवन ट्रेडिंग एंड सेलिंग करेंगी चीज प्रोडक्ट में। ये अग्रीमेंट के अनुसार ब्रिटानिया ट्रांसफर करेंगी 49 स्टेक टू BELSA, और कंसिडरेशन है 206 करोड़ का। और जो उनकी ब्रिटानिया डेयरी प्रोडक्ट लिमिटेड BDPL है वो कंट्रीब्यूट किया था 2.4% कंसोलिडेशन सेल्स ब्रिटानिया में फाइनेंशियल ईयर 22 में। उसका जो टर्नओवर था वो 340 करोड़ था। तो ये डील एक्सपेक्टेड है कि कंप्लीट होगी दिसंबर 2 तक। देन नेक्स्ट अपडेट है डाबर के ऊपर। डाबर लॉन्च कर रहे हैं उनका D2C पोर्टल ये फाइनेंशियल 23 के एंड तक, और ये कंपनी का है कहना है कि वो D2C पोर्टल है वो लाइव होगा ये फिस्कल के एंड में ओवरऑल कंट्री के लिए। और उनका जो पोजीशन है वो वन स्टॉप शॉप है, और उनका एंटायर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। तो करंटली जो है डाबर शॉप वो बीटा टेस्टिंग स्टेज पे है। तो ये एक पॉजिटिव अपडेट है डाबर के लिए। देन नेक्स्ट अपडेट है जोमेटो के ऊपर। जो चाइनीज ई कॉमर्स कंपनी है अलीबाबा ग्रुप, वो उन्होंने प्लान किया है कि वो उनका जो स्टेक है वो सेल करेंगे 3% से जोमेटो में, और उसकी जो वैल्यू है वो $200 मिलियन है, और ये ब्लॉक डील से होगा। और ये जो अपडेट है वो राउटर्स पे आया था, और उनका जो ब्रोकरेज है मॉर्गन स्टैनली, वो ये डील ब्रोकर से थ्रू होगी। और ये ब्लॉक डील है वो एक्सपेक्टेड है आज होगी ऐसा। और ये करके क्लोजिंग प्राइस मतलब जो अलीबाबा ग्रुप है वो ऑफर कर सकती है 5 to 6% करके क्लोजिंग के हिसाब से। देन नेक्स्ट अपडेट है ग्लैंड फार्मा के ऊपर। ये जो ग्लैंड फार्मा कंपनी है उन्होंने अपडेट दिया है कि वो बाय कर रही है फ्रेंच फार्मास्यूटिकल फर्म कैनेक्सी, और जो उसका जो वर्थ है वो अप्रोक्सीमेटली 1015 करोड़ है। तो उनका जो बेसिकली प्लान है कि वो एक्सपांड करेंगे उनका प्रेजेंस यूरोपियन मार्केट्स में। तो ये जो फार्मा कंपनी है होली उन सिंगापुर बेस्ड यूनिट है ग्लैंड फार्मा इंटरनेशनल PTA, और ये अग्रीमेंट से वो 100% स्टेक बाय करेंगी सिडिक्सी ग्रुप में और ओवरऑल इक्विटी वैल्यू के लिए। इसके अलावा ग्लैंड फार्मा के ऊपर और एक अपडेट है कि ग्लैंड फार्मा जो कंपनी है उनके जो फ्यूशन फार्मास्यूटिकल है वो उनका जो सेल है वो इंडियन ड्रग मार्केट में वो सेल करने वाली है।
और तो ये एक पॉजिटिव अपडेट है क्योंकि इसके कारण वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो स्टॉक हाई लेवल से बहुत ही करेक्शन देखा गया था, बट ये स्टेक सेल करने के न्यूज के कारण कल स्टॉक में अच्छी खासी रिकवरी देखी गई थी। देन नेक्स्ट अपडेट है बायोकॉन के ऊपर। बायोकॉन ने कल अनाउंस किया कि उनका जो सक्सेसफुली कंप्लीटेड किया उन्होंने $multi-million का जो एक्विजिशन था ग्लोबल बायोसिमिलर बिजनेस में, जो पार्टनर था वियाट्रिस कंपनी के साथ। और अकॉर्डिंग टू कंपनी का स्टेटमेंट है कि जो दोनों फर्म है वो ऑल एप्लीकेबल, उनका जो अप्रूवल है ग्लोबल रेगुलेटर से और उसमें यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ऑल इन्वेस्टर्स से एप्लीकेबल है। नेक्स्ट अपडेट है आदित्य बिरला कैपिटल के ऊपर। कंपनी को कल IFSCA से एक अप्रूवल रिसीव हुआ, जो रजिस्टर्ड फंड मैनेजमेंट एंटिटी है जो कैरी आउट करती है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। तो कंपनी को बेसिकली जो अप्रूवल मिला है वो गारंटेड हुआ है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी से नवंबर 28 को, और ये कंपनी ने अपडेट दिया हुआ है। और कंपनी कैरी आउट करेंगे सर्विसेज ब्रांचेस ऑफिस से इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर से गुजरात गिफ्ट सिटी से। देन नेक्स्ट अपडेट है कि बहुत सारे अभी हम लोग बजट के लिए सिर्फ 2 ही महीने, 1 फरवरी को मोस्टली बजट होता है, तो अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो लास्ट फुल बजट था, मतलब अभी जो बजट आएगा वो लास्ट बजट होगा बिफोर जनरल इलेक्शन से। 2024 में इलेक्शन जनरल इलेक्शन होने वाला है, तो उसके पहले वाले ये बजट होगा। तो मोस्टली गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा खासा मतलब एक्सपांड करने की कोशिश करेगी। तो अभी 298 प्रोजेक्ट है इंक्लूडिंग रोड रेलवे कनेक्टिविटी के लिए। तो लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने कुछ 7,54,000 के अराउंड बजट में मतलब एक्सपांड करने के लिए परमिशन दी थी। तो कमिंग ईयर में मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि इससे और ज्यादा एक्सपेंडिचर हायर होगा। तो इसके कारण KNR कंस्ट्रक्शन और जो रेल स्टॉक है वो उसमें रैली देखी गई है हम लोगों ने। और अभी जो मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो जो बीटन स्टॉक है उसमें भी आप रैली देख सकते हो। इवन IT जो सेक्टर है उसमें हम लोग पुल बैक रैली देख सकते हैं, बट ये रैली जो होगी वो पुल बैक की रैली होगी। देन लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक हम लोग को यहाँ से, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है और उसके रिलेटेड स्टॉक है वो हम लोग को यहाँ से अच्छे लग रहे हैं। तो ICICI प्रोडेंशियल है, उसमें 12 to 15% की रैली देख सकते हैं, और इसमें SBI लाइफ, HDFC लाइफ, मैक्स लाइफ, ये स्टॉक्स भी अच्छे हैं। इसके अलावा मैकडॉवल करके जो कंपनी है उसमें भी हम लोग अच्छी खासी रैली देख सकते हो, तो ये स्टॉक को आप वॉच आउट कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट है डिफेंस के ऊपर। डिफेंस का जो एक्सपोर्ट है वो 13,000 करोड़ हुआ था लास्ट ईयर, और फाइनेंशियल ईयर 23 में एक्सपेक्ट है 17,000 करोड़ होगा। और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो नंबर है वो बहुत ही जल्द डबल होगा। तो डिफेंस रिलेटेड जो स्टॉक्स है वो भी अच्छे लग रहे हैं। उसमें प्राइवेट एंटिटी में भारत फौज अच्छा लग रहा है, बाकी डिफेंस स्टॉक भी आप एक बार वॉच आउट कर सकते हो। देन नेक्स्ट अपडेट है इंडियन जो आरपू है, एक्सपेक्टेड है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर वो 8.2 हो सकता है 2023 में, जो डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ है ये साल का। तो इसमें भारतीय एयरटेल हम लोग को अच्छा लग रहा है, रिलायंस जियो इनको भी फायदा होगा, पर टेलीकॉम में भारतीय एयरटेल हम लोग को अच्छा लगता है। देन नेक्स्ट अपडेट है जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है चाइना में, और उसके अलावा चाइना में लॉकडाउन चल रहा है, उसके कारण बहुत सारे स्टॉक्स है वो उसमें इम्पैक्ट मतलब हम लोग देख सकते हैं। उसमें टाटा मोटर्स है, जो टाटा मोटर्स का जो DLR का 31% मार्केट शेयर चाइना में है, तो ये स्टॉक इम्पैक्ट होता हुआ देख सकते हैं। देन वोल्टा से उनका जो 20% है कंपोनेंट जो है वो चाइना से आते हैं। देन कैंपली पॉइंट है वो 40% उनका एक्सपोर्ट चाइना में होता है। VIP इंडस्ट्री है, उनके जो रॉ मटेरियल्स है वो भी चाइना से आते हैं। तो ये जो स्टॉक है उसके ऊपर हम लोग इम्पैक्ट देख सकते हैं, तो ये स्टॉक वॉच आउट करने जैसे होंगे। देन नेक्स्ट अपडेट है, लास्ट अपडेट है ONGC के ऊपर। ONGC गवर्नमेंट ने क्रेडिट पारे के उनको रिव्यू किया है उनके पैनल को, जो रेकमेंड करेंगी फ्लोरा सेलिंग प्राइस नेचुरल गैस के प्रोडक्ट में। और ये 5 इयर्स के लिए होगा $4 पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट से और 6.5 मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट से।
So in yesterday's session, we saw that Nifty is again made a new all-time high at 18,678 levels, and it closed almost above 18,600 levels. So overall, the index was up by 55 points. So this is a positive view, and we maintain that Nifty should be heading higher towards 18,800, 19,000 over the next couple of weeks. Having said this, for the day specific, maybe for one or two trading session, we believe that Nifty will trade in the range. This range would be more or less in the 18,400 to 18,800 levels. So even at the lower side, 18,400, we believe there are lots of put writing happening. The range is 18,400 to 18,100 levels. There are series of support levels at this zone. So whenever the index declines to this range, we believe there will be a buying seen in the stock specific sectors. On the higher side, maybe once this weekly expiry is done and the positions get range gets shift on the higher side, Nifty should be heading for 18,800, 19,000, 19,000 the upside. So bias for the Nifty remains positive. Coming to Bank Nifty, though it traded with positive, it closed marginally very flat at only 33 points higher. So the what we can see in Bank Nifty, eventually the high which was made on the last Friday, 43,339, that is acting as a small profit booking trade. So for the Bank Nifty also, we are having a range bound kind of view for the next 2-3 trading session. The range is more or less 42,500 to 44,500. On the lower side, 42,500, and then if just in case if 42,500 is broken, then again 42,000. So these are the very strong base for the Bank Nifty as of now. So we do believe that whenever these levels are retested, the stock specific buying action will be seen. So bias for Nifty and Bank Nifty both are overall they are very positive, but for the day, one or two trading session, we are expecting a range bound kind of trading session. Sector specific, yesterday we saw FMCG, metals and pharma. We saw some bounce in this sectors, whereas realty and oil and gas remained under pressure. Specifically in FMCG, HUL and Dabur is looking very positive on charts. So any correction in this counter can be viewed to go for a trading bet. Whereas in metals, JSW Steel and Hindalco is looking very positive. So even that can be bought at the current levels. Coming to this derivatives data, the Nifty futures has seen a long build-up in yesterday's session. The increase in OI was by 1.70%, which was the additions of 2.24 lakh shares. The PCR remained same, 1.28 versus 1.28 levels. So there was no change in PCR ratio. The major additions were seen in 19,000 call options by 77.32 million shares, and then 18,800 call options by 73.20 million shares. On the put front option, 18,500 put by 10.18 million shares, and then 18,400 put by 78.16 million shares. So basically this range of 19,000 to 18,400, these are the support and resistance level from the derivatives point of view. Coming to Bank Nifty also added a long positions in yesterday's session to the tune of 0.82%. This was an addition of 25,000 shares. The PCR actually declined from 0.88, it is declined to 0.83. So PCR has come down. So slightly negative. The major additions were seen at 43,000 put options by 45,000.69 million shares and 42,700 put options by 22.03 million shares. On a higher side call front, 43,200 call options by 38.83 million shares and 43,000 call options by 37.90 million shares. So the range for the Bank Nifty is 43,200 and 42,700. So this would be the support and resistance for the Bank Nifty from the derivatives point of view. The top three long positions were seen in HUL, SBI Life, and Hero MotoCo. And the three short positions were seen in Coal India, Bajaj Finserv, and Maruti. Coming to FI data, so FIs in the index, they have added the long positions.
and their net long short ratio is 73%. So they continue to maintain a long position in the market. The lastly, on update on a dollar index. So dollar index for the last 3-4 days it has taken a support at 104 levels, and it is seeing a little bit of bounce. So this basically 104 level has met with support as a 200-day moving average. So we believe that will hold for next couple of days, and we are expecting some bounce on the dollar index towards 108, 109 levels. So that would be something to watch. So that's all from my end. I will hand over to Bhavesh sir for more fundamentals update. Hi, good morning, team. So, starting with Tech Mahindra. So, Tech Mahindra has signed a MOU with XTIA Group to develop a 5G enterprise solution across few countries, which include Malaysia, Singapore, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, and Cambodia. So, XTI is a mobile telecommunications provider, and through this MOU, TechM will develop 5G solutions for industries like oil and gas, manufacturing, services, etc. So, this is positive for TechM. Secondly, Britannia has entered a JV joint venture with French company Bell SA and Britannia Dairy for development and marketing and selling of cheese products. So, according to this agreement, Britannia has transferred 49% stake to to French company BEL for consideration of 200 crores. The deal will be completed by 2nd December. And then lastly, Dabur is likely to launch the DTOC portal, which will position itself as a one-stop shop for its entire product portfolio. And Dabur shop is currently in the beta testing stage, and later it will go live. So currently we have a buy rating with a target price of 682. So that's it from me. Over to you, retail team. Yeah, thank you, sir, and good morning, everyone. We'll see more further updates, starting with Zomato. Chinese e-commerce and Alibaba is going to sell its 3% stake in the food delivery Zomato for $200 million. This would be via block deal, and this would be done at the 5 to 6% discount of yesterday's closing price, of approximately 60 rupees per share. So there might be volatility in the stock for that. Secondly, Gland Pharma said that their generic injectable maker is buying a French pharmaceutical from Cenexi for $120 million, approximately 1,015 crore. And as it is looking to expand its presence in the European market, the pharma company's wholly owned Singapore-based unit is going into put option agreement to buy 100% of the Cenexi group, and for a value not exceeding 120 million. Biocon Biologics said that they had successfully completed its multi-billion acquisition of global biosimilars business with Viatris. And according to the company, they have obtained an applicable approvals from the key global regulators, including the US Federal Trade Commission, this Competition Commission of India, and the IDBI, and investors from the investors. Aditya Birla Sun Life AMC said it has received approval from ISCA to act as a registered fund management entity and carry out AIF and PMS services. This approval has been granted by the International Financial Services, that is IFSC, on November 28 to Aditya Birla Capital, and the firm can carry out a visit through its branch office in the IFSC Gujarat website. So that's it from mine. I'll hand over to Prabhakar sir for more news. Thank you.